Assalamu alaikum students. We discussed the first part of bipolar junction transistors in our last lecture, and we shall continue with the same topic because this topic is such a versatile field, and lots of devices are made from PN junctions. Just like PN junctions, lots of semiconductor devices operate using various principles of operation of the bipolar junction transistors. So here is the list of the topics that we would like to cover in this current lecture. That is how the current what are the current various current components in a bipolar junction transistor, and then we would like to discuss the current voltage characteristics both for the PNP as well as NPN transistors, and then we would like to discuss the various gain factors, namely the hybrid parameters or characteristic parameters in the output as well as in the input current voltage relationship in a diode, in a transistor. And finally we would like to discuss another effect, early effect, which takes place or which comes into observation when the base collector junction is very highly reverse bias. So these are the few topics that we would like to discuss in detail in the current lecture today. As always, I would like to give you this list because not a single reference is never enough, and some of the figures and circuit diagram that I display in my lecture have been borrowed from some of these references. So here is a complete list, but as before, I like to concentrate on the following, on this reference which is indicated in this current slide. Most of my transparencies are based have been taken from Floyd, and I have redrawn them according to my desire and depending upon what I'm talking about. Okay. Now this is a familiar circuit symbol for any bipolar junction transistor which you would come across in any electronic textbook. As I mentioned before, just like a PN junction, that is a single diode, can be utilized for a Zener diode, as a light emitting diode, as solar cells, and so on and so forth. Similarly, bipolar junction transistors, abbreviated as BJTs, can be utilized to fabricate metal oxide semiconductors, commonly known as MOS devices, and then field effect transistors, FETs, which is another mode of operation of a common bipolar junction transistor. And then finally we have the most simple device operation, which is BJT, that is the bipolar junction transistor. Having discussed this, we will start with the analysis of the IV characteristic of a bipolar junction transistor. IV characteristics are, as you know, the voltage, the behavior or the variation of the currents flowing in a transistor in response to various biasing modes which we apply to the transistor. In our previous lecture, on our first part of the discussion on bipolar junction transistor, if you remember, I mentioned that there are three common mode of biasing, that is three common configurations which we use for the diodes to operate. One was the common base configuration, because base happens to be in the physical structure of the diode. Base is the common. And then we have the most commonly employed configuration, which is the common emitter configuration, and thirdly we have the common collector configuration. But in normal operation of the bipolar junction devices, we mostly use the common base or the common emitter configuration, whether it is a PNP transistor or NPN transistor. But there is one important thing we have to keep in mind, कि चाहे आपका PNP transistor हो या NPN transistor हो, in the normal mode of operation, that is in the active mode of operation, यानी जहाँ आपको transistor को as a current device use करना हो,
तो पहला जो डायोड है यानी इमिटर बेस जंक्शन जो है ट्रांजिस्टर का, उसको नॉर्मली हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन को नॉर्मली हम रिवर्स बायस करते हैं. फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, अकॉर्डिंगली द पोलैरिटी ऑफ द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस obviously would depend whether the transistor is NPN or whether you have chosen a PNP transistor. तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि by now we understand what a forward bias junction is and what a reverse bias junction is. So let's look at the overview first to refresh our memory of what we studied in the previous lecture on BJTs. That we can display a circuit symbol in which different kind of biasing are applied. Now this particular slide shows a definite use of a bipolar transistor, where it is used as a FET, that is field effect transistor, in which one type of carriers move under the influence of an applied electric field, and the device is known as the field effect junction, field effect transistor. This slide has been borrowed from my previous lecture, but I would need it for me to go on and describe how the currents IV characteristics are plotted. Now there are as I mentioned before, there are three modes of operation, or three modes of biasing for a bipolar junction transistor, listed as common base, common emitter, and common collector. As I mentioned before, the first two are normally utilized in various circuit operations. For the common base, obviously the input will be VEB and IE, and the output is between base collector, and the output current is IC. Similarly, for the common emitter configuration, the input is VBE and the input current is IB, and the output currents are VCE and IC, and similarly for the common collector configuration. Now let's look at the IV character for a typical IV characteristic to start with, and then we can go back and define the three active mode of operation for an output characteristic. Now here is a typical output characteristic. If you see this big dark blue region, in which the output output current curves are almost flat, this is let me explain what is an output curve. Whether it is a common base configuration, or whether it is a common emitter configuration or common collector configuration, the output circuit, that is between the base and collector, when you increase the collector voltage with respect to the base region or emitter region, then the output current designated as IC. So when we plot the output current IC obtained from the terminal terminal of the collector, and the output voltage between base and collector, in this case I have taken an example of a common emitter transistor or common emitter biasing configuration, and thus I have plotted the current VCE and the current IC and the voltage VCE. You would appreciate that a large current is obtained at the collector terminal, even though it is reverse bias, as I mentioned in my last lecture. Even though this base collector junction is reverse bias, but you are getting a large current of the order of milliamperes, which has been plotted in this transparency. So you see three different colors: a huge big region, blue region marked as the active region of the output characteristic, then an orange region, a small orange region marked as the saturation region, and finally at the bottom of the curve, output current curves, you see a green region which is known as cutoff region. You would also appreciate from this transparency that the magnitude of the input current, which is the base current IB, is of the order of microampere. That is, we are
feeding only as small as microampere current into the base, and we are getting a large current, we are collecting a large current from the collector terminal, which is of the order about 1000 times greater than your input current IB. So IC is roughly of the order of milliampere. So having pointed out the magnitudes of the base current IB and the magnitude of the collector current IC and the typical values for the reverse bias junction between base and collector, we see the values go as high up to 20 for a given bipolar junction transistor having a certain number of dopant impurities present in it. Now, as before, now having looked at this transparency and explained the three regions, that is the active region and the cutoff region and the saturation region, we can go back to a previous slide and define what these active, saturation and cutoff region means. Well, the active region means that the current, that is the emitter base junction, is now operating in the forward bias mode, and hence current is flowing. You get the output current at the collector terminal, and that current remains for a fixed value of the base current. That current more or less remains flat. We shall talk about the early effect later on, where the current, rather than remaining flat, the curves rather than remaining flat, they slightly they have a slight slope at higher voltages, at higher VCE voltages. That's called early effect, and we shall mention that later on. But for the time being, assuming an ideal operation, let's say that the output characteristics are flat, as we just saw in this blue area, that the output curves for a fixed base current are more or less constant. Now, this region is known as the active region because you are getting, for a given input, you are getting a large amount of current in the output circuit, and the region where curves are practically flat is termed as the active region. And this region precisely, this is precisely the region where we will be utilizing our bipolar junction action as an amplifier action, which will be discussed later on in some appropriate heading. Then, after this blue area marked as the active region, we discuss what is the saturation region, and which is shown by the orange color here. Now, active region, sorry, the saturation region is the barrier potential of the junctions, which cancel each other out and causing a kind of a short circuit. Now, this is the value at which the barrier potential of a given diode, because now we are considering the three-terminal device, that is the bipolar junction transistor, as consisting of two diodes, one between emitter and base and the second between base and collector, alternately biased, that is the first emitter base junction is forward biased and the second base collector junction is reverse biased. So the voltage has to be increased, that is the forward unless the forward voltage increases the barrier potential of the first diode, no significant increase in current would take place, and that is why this region is termed as saturation region. So in this case, the ideal transistor behaves like a closed switch, that is, current is not yet taking off, not a large amount of current is coming out of the first junction. And then in the cutoff region, again the current simply goes to zero, because now the diode behaves like an open circuit or in the off mode. So the ideal transistor in this case behaves like a switch, that if we look at the saturation mode and the cutoff mode, we can say that by alternating these two, we can consider or utilize the diode behaving as a switch.
So these are the three modes of operation depending upon the appropriate values of the applied voltage VCE between the base collector diode and choosing appropriate values for the input, that is base current, for a common emitter configuration. So we can choose the values and then define whether the transistor is acting in is operating in the active mode or operating in the cutoff mode or operating in the saturation mode. So in short, active mode acts like an amplifier, which is the as I just said, which is the most common use of the transistor in fabricating amplifier circuits. And then we have saturation, where the transistor acts like a short circuit, and then we have the cutoff region where it acts like an open circuit and no current flows. So let's start with the IV characteristic of the common emitter configuration, the current voltage characteristics for a common emitter configuration. Now, in this particular lecture, so far we are assuming that we are biasing the given transistor, whether it is PNP or NPN. We are biasing only with the DC biases, hence sometimes they are known as DC output characteristics, and their performance is defined in terms of the DC parameters, which we will also discuss it towards the end of this lecture. So in order to understand or analyze the DC behavior of the transistor in the active region, which I just mentioned behaves like a normal linear amplifier region, we can then have the emitter base junction as the forward bias junction and the base collector junction as the reverse bias junction. So mind you, in my lecture I normally take the example of the common emitter configuration, because that gives me an ease of understanding that if you have the input, if you choose the input as base, because emitter has been emitter is common between the input circuit as well as the output circuit, so only the two good parameters are the input, which is in the base, and output, which is the collector current. So if we take the ratio of the output current IC and the input current, which is IB, then normally the gain factor comes out to be as large as 100, as we shall see in a minute. So for the normal operation of a common emitter configuration, the junction between emitter and base is forward bias, and the junction between base and collector is reverse bias. The forward biasing and reverse biasing, as I mentioned so many times before, would have to be kept by using in mind that would depend whether the junction is an NPN or PNP, and accordingly your polarity will decide whether the junction, emitter base junction, is forward biased or reverse biased. Now here I show again, along with the circuit diagram shown on the left in the colored box, and on the right I have drawn the output characteristic for the same configuration, which I have chosen to be common emitter configuration. So this slide shows you the output characteristic, that is the current versus voltage plot. Current is plotted along the y direction, and the output voltage between the common and emitter is plotted along the x-axis, that is the horizontal direction. So the right side shows you the output curves, the output current curves for different values of the base current, and on the left side within the colored box I have shown you the circuit element, the circuit symbol for a forward biased emitter base junction and for a reverse biased base collector junction. You would also notice that I have chosen an NPN transistor, thereby the base is N-type and the emitter is P-type. Now
the emitter is n-type and the base is p-type. Therefore, accordingly, the polarity is such that emitter and base junction are forward bias, and similarly, the polarity of the collector and emitter is such that they have to be reverse bias. So you can see in the circuit symbol, you can see that the emitter base junction is forward bias with the bias VBB. The battery VBB is supplying forward bias potential, and VCC is supplying reverse bias potential. And again, as I mentioned in my previous lecture, we include two resistances, one a small resistance, so that to avoid a breakdown or to avoid not passing a large current through we do not want to pass a large current through the base, and also the load resistance RL, so that you can obtain the voltage out. You can see the output voltage on the oscilloscope and measure it through across the load. The interesting thing which we also saw before is that the IB currents that we choose, the constant values of the IB current that we choose are of the order of microampere, as shown in these flat curves, and the output current IC is of the order of milliampere. So it is the same values, same order of magnitude in this output characteristic, because this is another version, another way of explaining the output characteristic for the same common emitter configuration now for an NPN transistor. So whether we choose a PNP transistor or NPN transistor, all we have to keep in mind is the appropriate polarities of the biasing that we connect to the emitter or base or collector, because a single principle on which the transistor operation is based is that emitter base junction should be forward bias and base collector junction for a normal operation of a transistor should be reverse bias, so that the current flows only in the first emitter base junction and then can be collected at the collector junction, and the base collector junction does not generate its own current to interfere with the current coming from the emitter. So that, in simple words, is the transistor action, which is used for analyzing the current voltage characteristic, whether they are the output characteristic or the hybrid input characteristic, and so on and so forth. So in this transparency, you would notice that the active mode of operation, a very small base current controls a large collector current, and that we saw in one of the previous slide. In slide number 11 here, I had already remarked that the base current, let's say the highest base current, let's say that I have shown in this slide is 200 microampere, and you get approximately 30 milliampere current in response to this input base current. And this is what I have written now, that in the active mode of operation, whether it is a PNP transistor or an NPN transistor, in the output circuit you are getting a large current by injecting only a small current as small as microampere into the base region. So that is defined as the active mode of the transistor operation. That is, in summary, we can say that we are manipulating large amount of currents, we are obtaining large amounts of current by controlling two parameters, which in this case, as you see from this transparency very clearly, are the base input current and the output voltage VCE. So we can later on, when we go to amplifier circuit, because this is the simple operation or design of a very simple design for an amplifier circuit, that even in the, at this point,
mention another interesting phenomena. Look at this slide. Look at this slide number 11, which I shall use as a reference slide throughout my lecture today. Look at the values. The input in this common emitter configuration, let's say, is of the order of 100. Let's concentrate on the 100 microampere input base current, and we get approximately 15 milliampere output current. So you see that you already are your bipolar junction transistor in the active mode of operation is already acting as a DC amplifier. That is, if you bias in the forward emitter base junction in the forward mode, then it will allow the current to flow through the emitter base diode, and that current from the emitter passing through the base is ultimately transported all the way to the collector terminal, where it is collected and designated as the collector current. So this transparency, this slide number 11, indicates that in a way the bipolar junction transistor or transistor is already acting as a simple DC amplifier circuit. So how then we can make very fancy or sophisticated or AC amplifiers? That would be devoted or discussed in a different manner. But intuitively or qualitatively, we can understand the amplification aspect, that is the operation of a DC transistor as an amplifier circuit, just by looking at this active region of the transistor. In the saturation region, the currents, the voltages are of the order of 0.2 volts, at which the current starts to increase. Output current starts to increase significantly only when the output voltages are of the order of 0.2. Now the 0.2 or 0.3, as you would recall, is a typical value for germanium diode. For silicon diode, it will have to be approximately of the order of 0.7 volts, beyond which the when the voltage VCE gets higher or beyond that cutoff value, then the transistor will enter into the active mode. And in the cutoff mode, which is achieved by reducing IB to 0, then obviously IC would also become 0, because logically, if there is no input, there is no base current, then you would not be getting any output current. So by alternating these two modes, that is the saturation mode and the cutoff mode, we can define that the transistor can be utilized as a switch. So so far we have already seen in transparency number 11, in slide 11, and combining it with slide 13, we have already seen the two modes of operation of the transistor as an amplifier circuit as well as a switch. So these are the basic principles for amplifier and switch, and then later on at some other stage we can design some AC amplifier circuits and switch circuits. Now I will show you another transparency, which is the common base configuration drawn for an NPN circuit, and we will, having seen this biasing mode for the NPN circuit, then we can move on to show its output characteristic. So this is the output characteristic, which is slightly different from the one which we saw in the slide 11. Now what is the difference between slide 11 and slide 15? Because there I had assumed as if the output characteristic were drawn for a nearly ideal transistor in which the output curves for a given fixed value of the base current remain fixed. लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं? यहाँ आप ये देख रहे हैं कि आपकी आउटपुट कर्व्स जो हैं किसी भी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ बेस करंट के लिए वो मोर और लेस, सॉरी इन दिस केस चूँकि हमने इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया है, तो बजाय बेस करंट के अब आपकी इनपुट क्या होगी? इमिटर करंट होगी। तो किसी भी
इमिटर करंट के लिए अब आपकी वैल्यूज़ जो हैं आपकी कर्व्स जो हैं, आउटपुट करंट आईसी की कर्व्स जो हैं वो स्लाइटली स्लोप के साथ इंक्रीज कर रही हैं. दैट इज दे आर नॉट फ्लैट एज वी सॉ इन द केस ऑफ द एन आइडियल आउटपुट characteristic shown in slide 11. So we notice here that and by the way this curve has been drawn for a silicon diode. इसीलिए आपकी जो saturation region है वो roughly 0.7 या 0.8 वोल्ट से टेक ऑफ कर रही हैं कर्व्स. और 0.7 जैसा हमने पहले कई दफ़ा बताया, ये वो टिपिकल वैल्यू है या बिल्ट इन पोटेंशियल वैल्यू है किसी भी टिपिकल पीएन जंक्शन डायोड के लिए, कि जिसके बियॉन्ड फिर जब आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज जो है जब वो उससे ज़्यादा हो जाए, बिल्ट इन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, तो फिर जाके आपकी करंट इंक्रीज होना शुरू होती है. अदरवाइज़ आपकी करंट जो है वो नेग्लिजिबल रहती है. तो इसीलिए आपकी कर्व जो है आउटपुट करंट कर्व जो है वो 0.8 के बियॉन्ड इंक्रीज होना शुरू होती है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे जैसे आप इनपुट करंट, जो कि इस केस में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की केस में ज़ाहिर है इनपुट आपकी IE होगी, क्योंकि बेस को तो आपने कॉमन ले लिया. तो जैसे जैसे IE की वैल्यू बढ़ रही है उसी तरह आपकी कलेक्टर करंट भी बढ़ रही है. तो जैसे मैंने पहले कहा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में चाहे आप कॉमन बेस ले या आप कॉमन इमिटर ले. लेट मी गो बैक टू स्लाइड 11 once again to have a comparison between the common emitter configuration and common base configuration. अब गौर से देखिए इस ट्रांसपेरेंसी में, हालांकि मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जैसे ही आप आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज अब आपकी VCE है, क्योंकि बेस इमिटर को आपने कॉमन ले लिया है. सो इन द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ VCE. तो अब आप क्या देख रहे हैं कि करंट्स जो हैं वो IC और VCE के बीच में हैं और बेस करंट का मैग्नीट्यूड अब माइक्रो एम में है. लेकिन जब आप अगली ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं जो कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के है, तो अब आपकी वोल्टेजेस बिटवीन बेस एंड कलेक्टर हैं. आउटपुट वोल्टेज नाउ इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर एंड द आउटपुट करंट स्टिल रिमेन्स IC. तो इनपुट करंट अब ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम है. क्यों? क्योंकि अब फिर हम उस फिजिकल एनालिसिस पे चले जाते हैं, ओरिजिन ऑफ द करंट कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं कि बेस करंट होती क्या है. बेस करंट ये होती है कि जब भी आपके इमिटर से, जो कि हमेशा हमने बताया कि हेविली डोप्ड होता है, जब हेविली डोप्ड इमिटर से कैरियर एंटर करें, ख्वाह वो होल्स हों पी टाइप इमिटर के केस में या इलेक्ट्रॉन्स हो एन टाइप इमिटर के केस में, तो जब इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इमिटर से बेस में एंटर होते हैं तो बेस में अल्टरनेट डोपिंग होती है. मसलन अगर इमिटर पी टाइप है तो बेस एन टाइप होगा. तो इमिटर वाले होल जब बेस में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बेस में पहले से पड़े हुए हैं उनके साथ रिकम्बाइन करेंगे. तो चूंकि बेस में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, डोपिंग डेंसिटी कम है बनिस्बत इमिटर के, तो जो लॉस है, हालांकि रिकॉम्बिनेशन में इक्वल नंबर ऑफ होल्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बेस, दोनों का इक्वल नंबर लॉस हो रहा है. लेकिन चूंकि बेस की डेंसिटी पहले से ही बहुत कम थी तो ये लॉस, अब ये नंबर की रिडक्शन जो है, कमी जो है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नज़र आएगी. तो उस नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन के लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए अब आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कैरियर्स दाखिल हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दाखिल हो रहे हैं. तो ये कॉज होता है बेस करंट का. और इमिटर करंट का क्या कॉज हुआ? द होल्स फ्लोइंग फ्रॉम इमिटर टू बेस and electrons flowing from base to emitter. तो ये आपकी टोटल इमिटर करंट हुई और आपकी बेस करंट हुई. तो अभी जैसे मैंने बताया कि इमिटर चूंकि हेविली डोप्ड होता है और ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ carriers move from emitter to base, so obviously emitter current would be of the order of milliampere and base current would be of the order of microampere. तो ये दोनों चीज़ें
ये दी करंट्स, इनपुट करंट्स का मैग्नीट्यूड देखने के लिए मैंने दो डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर्स लिए. वन वाज PNP, one was a transistor which was in the common emitter configuration, therefore the input was base current और base current का magnitude microampere हो गया. और इसमें अब मैं ले रही हूँ common base configuration, और जब common base हुआ तो फिर आपका input जाहिर है base को तो अब हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो अब जाहिर है कि आपका इनपुट इमिटर से आ रहा है, और इमिटर जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया हेवीली डोप्ड होने की वजह से इमिटर करंट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर. सो दिस ट्रांसपेरेंसी not only shows the relative input values as well as it shows the voltages, the output voltages, which now is VBC, and in the previous case it was VCE. And there is another feature that you see in this slide. So from my point of view, or from the point of view of today's lecture, where we are discussing the current voltage characteristics for a given transistor, whether it is PNP or NPN, there are three important things that we have to understand and analyze today. One is that the output characteristics, by the way, transistor की output characteristic ज़्यादा significant और important है बनिस्बत input characteristic के. वो इसलिए भी जैसे अभी हमने कई दफ़ा जिक्र किया कि ये आउटपुट करंट ही है जो आपको एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर सर्किट बनाने में हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर एज ए स्विच. तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रही हूँ इन मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. कभी हम कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, कभी हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, कभी हम NPN ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, कभी हम PNP ट्रांजिस्टर ले लेते हैं. और यही मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि बार बार मैं अपने लेक्चर्स में अब रेफरेंस बुक्स की लिस्ट इसलिए लिस्ट करने लग गई हूँ कि unless you sit down and solve numerical problems, you will not get a complete grasp on the subject of what we are studying. क्योंकि circuit electronics में the most important aspect is the circuit solving, how to solve a circuit, how to get various current components, how to get various voltages in a given circuit, and that is the only way by which you can understand the operation, whether it is a diode or whether it is a transistor. Okay, so we move on. So I am trying to give you different flavors of the simple transistor action, which is the voltage, current voltage characteristic, whether it is NPN or PNP transistor. Right. So you notice that in this case the input and output currents are more or less similar. That is something which is in contrast to slide number 11, which we saw. Let me go back to slide 11, because if I keep flipping between these two slides, then later on it will help us in understanding the transfer characteristic, or in simple words, the transistor characteristics or transistor hybrid parameters. Let's look at the input current. IB is equal to 50 microampere. The input is 50 microampere and the output is approximately greater than 7 milliampere. So you get a large gain. That is, a very small current of the input current of the order of 50 microampere gives you a large output current of the order of 7.5 milliampere. So this is a very significant point to note, that in the common emitter configuration, a small amount of input current gives you a very large amount of output current when
the configuration of the transistor is done in such a way that your emitter is common in the circuit. Then comparing this slide number 11, हम इसको अब कंपेयर करें इस 15 स्लाइड को, तो 11 और 15 को कंबाइन करने से आप क्या देख रहे हैं कि जब आप उसी ट्रांजिस्टर को, चाहे वो पीएनपी था ये एनपीएन था, अब अगर आप इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में बायस कर रहे हैं, हम इस तरह बायस कर रहे हैं कि अब दोनों बैटरीज के बीच में, यानी इनपुट और आउटपुट सर्किट के बीच में, अब आपने बेस को अगर कॉमन कर दिया है, जो कि मैंने ये दिखाया है, ये देखिए, अब मैंने बेस को कॉमन कर दिया है बिटवीन VBB एंड VCE। तो बेस को कॉमन करने से हमारी इनपुट क्या बनी IE और आउटपुट क्या बनी IC। तो आप देखिए रफली कोई इतना सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है इनपुट करंट IE और आउटपुट करंट IC। तो यही हम आगे चल के डिफाइन करेंगे एज अ गेन पैरामीटर अल्फ़ा। सो अल्फ़ा वुड बी अ रेशो of input current IE and output current IC. That is, IC over IE would be defined as alpha. So we will keep discussing these two slides throughout this lecture, that is slide 11 and slide 15, just to understand that the same diode, the same transistor, whether it is PNP or NPN, can be used for controlling the output current by controlling will give a different output current IC by controlling the input current IB or IE. So both these will serve as a reference point when we go on to move the transistor parameter or the transistor characteristics. So let's move on forward. Here is the same comparison that I've been talking about, the comparison between slide 11 and slide 15. Now you notice that in the common base configuration in the diagram marked A and the common emitter configuration marked B, you can make the comparison between the input currents IB and output current input currents IE for the common base configuration and IB for the common emitter configuration. Look at the values or magnitudes of the input current, which is about 100 times greater or 1000 times greater from microampere to milliampere. The inputs are so different when we use a common emitter configuration or the common base configuration. Similarly, you can also appreciate the voltages applied between the common emitter, which is VCE, and common base, which is base collector voltage or emitter collector voltages. Normally in the base collector voltages in the common bias configuration, we can go as high as, let's say, 50 volts. But in the case of emitter configuration, common emitter configuration, if we go beyond 20 or so, then we talked about another phenomena in the breakdown phenomenon of breakdown while we were discussing the breakdown junctions for single PN diodes, semiconductor diodes. So this is again a very interesting slide in which you can compare the magnitudes of the input current IB and IE respectively when we bias the transistor in the common emitter configuration or in the common base configuration, and also the magnitude of the output currents, because that will give you an idea that how much gain in current you are getting for various mode of biasing configuration. Now I come to the third mode of biasing, which is the common collector configuration. Having discussed the common emitter and the common base configuration, now we come to common collector configuration. While common collector configuration more or less is the same as the common emitter configuration, because here the input again is the base current IB and output, rather than being IC, is now IE,
and as we mentioned, IE is a large component in the transistor of the order of milliampere, just as large as the collector current IC. तो IC और IE more or less same magnitude की होती हैं, जबकि बेस करंट उसके मुकाबले में 1000 times smaller और 100 times smaller of the order of microampere होती है। तो फिर हम दोबारा देख रहे हैं इसी तरह के आपके एक्टिव रीजन भी मैंने डिस्प्ले किया है स्लाइड में, आपके सैचुरेशन रीजन भी मैंने डिस्प्ले किया है, और कट ऑफ रीजन भी डिस्प्ले किया है कि जबकि बेस करंट ज़ीरो होती है, क्योंकि देयर इज़ नो इनपुट करंट IB, देयरफॉर the output current IC would also be zero. तो ये एक the third mode of transistor biasing mode of transistor था, having discussed the common base configuration, the common emitter configuration and the common collector configuration now. तो तीनों configurations में मैंने आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ही दिखाई है। ये अब आपको सर्किट सिंबल नज़र आ गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें अगेन मैंने NPN ट्रांजिस्टर को लिया है। अब हम देखेंगे दी बाइपोलर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर between the collector current IC and VBE. This is the behavior between the output current IC and the input voltage VBE. तो आप देखेंगे कि it behaves exponentially, जैसा कि पहले हमने डायोड के केस में जिक्र किया था। और अब अगर मैं इसको मुख्तलिफ अंदाज से प्लॉट करूं, जैसे मैंने ए में दिखाया है कि रिलेशनशिप बिटवीन IB एंड IC, जैसे मैं बहुत पहले आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में दिखा चुकी हूं। माई रेफरेंस अगेन वुड बी स्लाइड नंबर 11। तो आपने स्लाइड नंबर 11 में देखा था कि जैसे जैसे हम बेस करंट IB को बढ़ाते हैं चूजिंग द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो इनपुट करंट IB के बढ़ने से आपकी आउटपुट करंट IC सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपकी IE यानी इनपुट करंट IE के बढ़ाने से टू अ सर्टेन एक्सटेंट IC भी बढ़ रही है। तो वही रिलेशनशिप मैंने आपको दिखाया है कि IB इनपुट करंट वर्सेस IC द आउटपुट करंट। अगर आप प्लॉट करें, दिस ऑब्वियसली विल बी, ये कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा मीनिंगफुल है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में के लिए, IB वर्सेस IC प्लॉट। तो दिस वुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड वी कैन डिफाइन हाइब्रिड पैरामीटर, फॉरवर्ड हाइब्रिड कॉमन एमिटर पैरामीटर, जिसको एब्रीविएशन में मैंने लिखा हुआ है H द हाइब्रिड पैरामीटर, F फॉरवर्ड, E फॉर अ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में IB और IC दो करंट कंपोनेंट्स हैं आपके पास। तो IB और IC जो हैं वो लीनियरली इंक्रीज करेंगे और इनकी जो स्लोप है दैट विल गिव यू द गेन फैक्टर HFV, और इस गेन फैक्टर को आगे चल के मैं दोबारा डिफाइन करूंगी, जिसको हम कहते हैं द बीटा गेन फैक्टर, द DC बीटा गेन फैक्टर फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरी तरफ मैंने प्लॉट किया है the output current IC versus the input voltage VBE, and that is defined as the conductance for a given diode. अब मैं आ जाती हूँ different current components की तरफ, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करके दिखाई थी। अब हम क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली इन वेरियस करंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि सो फार मैंने बात की थी सिर्फ IE यानी इमिटर करंट की। इमिटर करंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, फर्दर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये टू पार्ट्स कौन से हैं और किस तरह हैं। लेट्स टेक एन NPN ट्रांजिस्टर। ये एक NPN ट्रांजिस्टर की सर्किट सिंबल है। याद रखिए कि एरो हेड जो इमिटर पर इंडिकेट किया जाता है दैट डिस्टिंग्विशेस वेदर द ट्रांजिस्टर इज PNP और NPN।
तो NPN ट्रांजिस्टर में ये एरोहेड डाउनवर्ड होगा टुवर्ड्स इमिटर, यानी करंट फ्लोज फ्रॉम बेस टू इमिटर इन अ फॉरवर्ड बायस जंक्शन, और PNP ट्रांजिस्टर के लिए ये एरोहेड अप होगा टुवर्ड्स द बेस, दैट इज फ्रॉम इमिटर टू बेस, और NPN में फ्रॉम बेस टू इमिटर. तो जस्ट बाय लुकिंग at the arrowhead we can tell that this is an NPN transistor operating in the base emitter junction obviously would be forward bias. तो चूंकि ये NPN transistor है तो emitter would be emitter which is base which is positive. NPN transistor, the base would be positive, is connected with the positive terminal of the battery, and emitter is for an NPN transistor, the emitter, negative emitter, the N-type emitter is connected with the negative terminal of the battery. So these two polarities of VBE, the bias between base and emitter indicates that the base and emitter junction is forward bias. Now this is a very qualitative circuit which shows how the biasing, what are the biasing between emitter base diode and between base and collector diode. So let's look at the other diode which is between base and collector. Now by looking at the arrowhead, I just said that this is a conventional view of the NPN transistor. Now emitter is N, the emitter is the one on which you see the arrowhead is connected with the negative terminal. P, base is P, which is connected with the positive terminal. So we satisfy the first criterion for a normal mode of operation, that is the emitter base junction. For this, NPN transistor is forward bias. Now let's move on. Therefore our collector would be negative N-type, and therefore N-type region, the N-type collector must be connected to the positive terminal of the battery, and that is what you see on the extreme left side, that collector, N-type collector is now connected with the positive polarity. That would make it reverse bias, and similarly emitter is connected to the negative polarity of the battery. Now emitter is connected to the negative polarity for both the voltages, VBE as well as VCE. So thereby VCE has to be larger compared to VBE, so that your emitter is relatively at a negative, higher negative potential for the base collector junction. So this slide, just like 11, indicates the various qualitatively various voltages in a given transistor and the various current components. So having discussed the output voltage VCE and the input voltage VBE, and also explaining that the emitter base junction for the NP transistor is forward bias and the base collector junction for the PN transistor is reverse bias, we can then move on to discuss the respective three current components, namely IB, IE and IC. As you look at the polarity, with respect to the polarity of the input voltage, the current would be towards the base, and in the loop following the Kirchhoff law, current and as well as voltages law, the current would be moving through the from base to emitter and back again through the input loop. Similarly, in the output loop, the bigger square, the bigger rectangle, you will see that the current again is flowing in the loop, and we have shown the IC direction, keeping the conventional direction of current from positive terminal to the negative terminal. Both IC and IE are flowing in the appropriate direction as defined by the positive polarities of the voltages, both the input voltage VBE and the output voltage VCE. So we have three current components shown by the arrowhead and two voltages in the input circuit and output circuit. So again, this
transparency 19 will be utilized throughout our circuit analysis, where it very clearly illustrates ना सिर्फ आपको ये वोल्टेज सर्किट बाइसिंग दिखा रही है मीटर बेस जंक्शन की ये स्लाइड, बल्कि आपको करंट्स की डायरेक्शन और करंट्स के कंपोनेंट्स, करंट कंपोनेंट्स एज वेल एज देयर डायरेक्शंस भी इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब हम समरी की तरफ जाएंगे इस आज के लेक्चर की, तो आप देखेंगे स्लाइड 11 आपको क्वालिटेटिवली दिखा रही है रिलेशनशिप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, करंट वोल्टेज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का, चाहे आप एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लें या पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लें। फिर हमने स्लाइड 15 देखी और उसमें हमने थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू दिखाया था कि करंट बिल्कुल फ्लैट नहीं है जैसा कि 11 में थी, जो कि एक अस्यूम किया गया था, एक आइडियल डायोड है। द करंट इज स्लाइटली राइजिंग, that is there is a definite slope in the current, और वो हम आगे चल के अर्ली इफेक्ट में उस स्लोप को डिस्कस कर लेंगे। तो स्लाइड 11, स्लाइड 15 एंड स्लाइड 19 नाउ आर द एसेंस ऑफ today's lecture, which explains how the current voltage relationship can be understood, can be drawn for a given transistor. अब इसमें मैंने उसी चीज़ को दोबारा दिखाने की कोशिश की है और साथ में ये बताया है कि अगर मैं कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन लूँ, यानी बाइसिंग ऐसे करूँ कि इमिटर मेरा अब दोनों वोल्टेजेस में, इनपुट और आउटपुट सर्किट की वोल्टेजेस में कॉमन है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? एरो हेड के सिंबल से। व्हेनेवर द एरो पॉइंट्स from base to emitter you would realize that this is an NPN transistor, लेकिन मैंने टॉप पे हेडिंग में लिखा हुआ भी है। तो NPN ट्रांजिस्टर है और उसको कैसे बाइस किया हुआ है कि इमिटर जो है वो मेरा कॉमन है बाइसिंग में, बोथ इनपुट बाइसिंग और आउटपुट बाइसिंग में। अगेन द करंट डायरेक्शंस आर शोन, लेकिन जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अब इसमें दिखाई है कि अब चूंकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन बाइसिंग मोड जो है ट्रांजिस्टर का, उसमें मैंने इमिटर को कॉमन लिया है, तो जाहिर है मेरी इनपुट क्या रह गई? बेस करंट, और आउटपुट क्या हुई? आईसी करंट। तो गेन फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं द आउटपुट, द रेशियो ऑफ द आउटपुट एंड द इनपुट। तो हम किस चीज़ की रेशियो ले रहे हैं? हम आउटपुट करंट आईसी और इनपुट करंट आईबी की रेशियो निकालेंगे। तो ये आपको मैंने एरो हेड में दिखाया है कि आईसी, द करंट गेन फैक्टर इज डिफाइंड एज बीटा and it is a ratio between IC and IB। और obviously जैसे मैंने शुरू में कई दफ़ा जिक्र किया था कि 11 स्लाइड नंबर 11 को मैं क्यों अहमियत दे रही हूँ कि वहाँ आपने देखा कि IB दैट इज़ इनपुट का मैग्नीट्यूड कितना भी आप ले लें, ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो एम्पियर के, इवन 100 माइक्रो है, अगर आप 100 भी ले लें तो भी वो 100 माइक्रो एम्पियर के बियॉन्ड आप नहीं लेते। तो आपकी आईबी जो है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज में है और आईसी हमारी मिली एम्पियर के रेंज में है। तो स्ट्रेट अवे आपने देखा कि typical values for the gain in the common emitter configuration roughly is of the order of 100। तो 100 गुना 100 टाइम्स आपकी करंट, आउटपुट करंट हो गई, और इसको आप सिंपल लफ्ज़ों में कह देते हैं कि द ट्रांजिस्टर इज एक्टिंग एज DC एम्पलीफायर only when you are operating it in the active region। तो और IE जैसा कि पहले हमने बताया, अब हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि IE consists of two current components। कुछ वो होल्स या इलेक्ट्रॉन्स इमिटर के जो बेस में रिकॉम्बिनेशन में जिनका लॉस हो गया और बकिया फिर आपके कलेक्टर में पहुंच गए। तो ऑब्वियसली कलेक्टर करंट प्लस द बेस करंट मिल के टोटल बनी इमिटर करंट, या दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि इमिटर करंट is therefore a sum of the base loss in the base plus whatever reaches the collector, which is IC. Therefore IE is a sum of IB and IC। And to remind you once again,
IB is of the order of microampere and IC is of the order of milliampere. IE again is of the order of milliampere. तो IE और IC रफली इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं और यही चीज़ हमने स्लाइड 15 में उसको बहुत we emphasized this point in slide 15 that IE and IC are more or less comparable. Obviously IC is slightly less or smaller than IE, but in hypothetical case if IC reaches the same value as input IE तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो बड़ा एफिशिएंट है कि पूरी की पूरी IE करंट के मैग्नीट्यूड को ट्रांसपोर्ट करके IC की तक पहुंचा रहा है. दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो इज डिफाइंड एज ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी और द गेन फैक्टर अल्फा. तो हम आगे चल के इन दोनों गेन फैक्टर को और ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी को दोबारा प्रॉपर रेशियो में डिस्कस करेंगे. तो IE जो है वो IC प्लस IB और IC इज IE माइनस IB, यानी थोड़ी सी करंट का लॉस हो रहा है बेस में. तो लिहाजा कलेक्टर करंट फिर से दोहराएं तो कलेक्टर करंट स्लाइटली लेस होगी बनिस्बत IE के. किस अमाउंट से लेस होगी? दैट इज बेस करंट. अब मैं उन्हीं पैरामीटर्स की तरफ आती हूँ जिनका हम थ्रू आउट दिस लेक्चर जिक्र करते आए हैं. दे आर कॉल्ड एज हाइब्रिड पैरामीटर्स और ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स. दे आर ऑल्सो नोन एज द गेन फैक्टर्स या करंट गेन पैरामीटर्स, क्योंकि सो फार मैंने आपको सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स चूज़ की थी आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि उसमें हमने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी. मैंने 3 ट्रांसपेरेंसीज को एज रेफरेंस ट्रांसपेरेंसी या रेफरेंस स्लाइड्स इस्तेमाल किया था. द 11, द 15 एंड परहैप्स स्लाइड 19 के 11 में हमने IB हमारी इनपुट थी और IC आउटपुट थी और 15 में IE इनपुट थी और IC आउटपुट थी. तो वही चीज़ अब हम यहाँ सम डाउन करते हैं, उसको सम अप कर लेते हैं उन पैरामीटर्स को, करंट कंपोनेंट्स को, इनपुट और आउटपुट करंट कंपोनेंट्स को हम सम अप कर लेते हैं. तो हम कैसे सम अप करते हैं कि we define 2 quantities which characterize the operation of a transistor, and these 2 quantities are termed as or defined as common base current gain alpha and common emitter gain beta. तो alpha आप gain alpha is the ratio of the output to the input when the biasing is such that base has been taken to be common, और बीटा आपकी रेशो है आउटपुट और इनपुट की, जबकि इमिटर जो है वो आपका बाइसिंग सर्किट में कॉमन है. दे आर बोथ टर्म्ड एज DC गेन फैक्टर्स, क्योंकि अभी तक हमारी जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस हैं, जैसा कि आपने सर्किट में देखा, ये DC वोल्टेजेस हैं. तो इनपुट वोल्टेज VBE और आउटपुट वोल्टेज VCE दोनों की दोनों DC वोल्टेजेस अब तक हमने लिए हैं. तो इसी मुनासबत से ये बीटा और अल्फा गेन पैरामीटर्स या हाइब्रिड फैक्टर जो हैं ये आपके DC गेन फैक्टर्स कहलाते हैं. तो बीटा इज समटाइम आल्सो कॉल्ड DC बीटा और DC अल्फा. तो बीटा जो है कॉमन एमिटर गेन फैक्टर है और अल्फा जो है वो कॉमन बेस करंट गेन फैक्टर डिफाइन करते हैं. तो अल्फा एंड बीटा आर समटाइम आल्सो रेफर्ड टू एज विद ए सबस्क्रिप्ट DC, जैसा मैंने अभी कहा कि चूंकि हमने DC बायसिस से डील कर रहे हैं सो फार. ये अब another definition है, that is the ratio of the output current IC and the input current IE in a common base circuit. जब आप बेस को कॉमन कर दें तो जाहिर है इनपुट फिर आपकी IB तो नहीं होगी, तो 2 करंट कंपोनेंट्स आपके रह गए. आउटपुट हमेशा कलेक्टर ही होगी IC, इनपुट आपकी IB और
IE या IB होगी, डिपेंडिंग कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बाइसिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, यानी बेस को कॉमन कर देते हैं बोथ इनपुट और आउटपुट सर्किट्स में, तो फिर हमारी इनपुट IE रह जाती है। तो IE इनपुट रेशियो ऑफ आउटपुट IC एंड इनपुट IE इज डेजिग्नेटेड एज हाइब्रिड फॉरवर्ड common base factor, H for hybrid, F for forward junction, which is the input junction, and B where the base is common and also known as the alpha gain factor. This is IC over IE, and as you can intuitively decide from qualitative analysis of the output characteristic that this is going to be less than 1. It will be negative क्योंकि IE आपकी slightly greater है from IC by an amount IB, क्योंकि IB आपकी बेस में लूज हो गई थी जब इमिटर से कैरियर कलेक्टर की तरफ जा रहे थे. So alpha would be negative. Hypothetically, if there is no loss in the base, you could say that you can get almost an equal amount of current IC which was present in IE. इसी तरह हम एक और फैक्टर बीटा डिफाइन करते हैं. बीटा इज द गेन फैक्टर और रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू इनपुट करंट व्हेन द इमिटर वाज कॉमन. तो जब इमिटर दोनों इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन था तो जाहिर है आपकी इनपुट IB बनी और आउटपुट पहले की तरह IC बनी. तो आउटपुट IC रेशियो ऑफ द आउटपुट IC टू द रेशियो ऑफ इनपुट IB, ये बीटा कहलाती है. And thus IC is beta times IB. So in the common emitter configuration, thus we see, and in the beginning I had remarked कि क्यों हम common emitter configuration को prefer करते हैं in certain operations, क्योंकि अब आपकी आउटपुट जो है वो रफली 100 टाइम्स आपकी इनपुट की निस्बत बढ़ गई. एंड दिस इज़ what is illustrated by the equation in the box कि IC becomes almost 100 times greater than the input IB. आगे चलते हैं. तो ये आपके ये आपका कहलाया बीटा और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, या इन अदर वर्ड्स बीटा इज आल्सो नोन एज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कि इनपुट करंट कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में. माइंड यू कि कॉमन इमिटर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं, यानी इमिटर को बाइसिंग में आउटपुट सर्किट और इनपुट सर्किट में कॉमन ले लेते हैं, तो फिर जो आपकी गेन फैक्टर है इनपुट का और आउटपुट की इनपुट की निस्बत आउटपुट आपका ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको गेन हो गया. एंड देयरफॉर बीटा इज समटाइम रिफर्ड एज द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर. तो आप इसी तरह देख रहे हैं जो मैंने ट्रायंगल में दिखाया है कि रेशियो ऑफ IC ओवर IB व्हिच इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू इनपुट करंट इज नोन एज बीटा. और बीटा DC बीटा की वैल्यू, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कहीं कहीं लिटरेचर में डिपेंडिंग ऑन द टेक्स्ट बुक और द रेफरेंस वी आर स्टडिंग वी आर रेफरिंग टू, बीटा के साथ कभी कभी सबस्क्रिप्ट में DC भी नज़र आता है. इसका सिंपली मतलब होता है कि हमने DC वोल्टेजेस बाइसिंग में लगाई हुई हैं. तो बीटा DC कैन बी एज लार्ज, कैन बी एज स्मॉल एज 30 एंड कुड बी एज लार्ज एज 300. तो बीटा की वैल्यूज़ 30 और 300 के बीच में आपको मिल सकती हैं depending upon the doping densities, depending upon the size of the transistor and depending on certain other factors. लेकिन जो typical values हैं typical transistors की, वो about beta is about 100. तो ये जो वैल्यू मैंने कोट की है वो मैंने ट्रांजिस्टर का नंबर भी लिख दिया है कि सम टाइम यू कैन हैव एज हाई गेन फैक्टर बीटा एज रफली 300. और ये जो डेटा शीट्स में अमूमन ट्रांजिस्टर की डेटा शीट्स में ये गेन फैक्टर जो है फॉरवर्ड गेन फैक्टर ये आपको अमूमन दिया जाता है. Another way of writing the relationship कि ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेरियस गेन फैक्टर्स. और साथ में मैंने एक और चीज़ लिख दी है
कि अगर हम AC जहाँ इस्तेमाल करें, जो कि हम रियल एम्पलीफायर सर्किट में AC सिग्नल्स इस्तेमाल करते हैं, इन एडिशन टू स्मॉल DC सिग्नल्स, तो AC सिचुएशंस में तो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन हमारा मूव करेगा, एंड अल्फा इज दस डिफाइंड एज डेल्टा IC ओवर डेल्टा IE, which refers to small signal AC situation या small signal AC operation of the output characteristics. और जैसे मैंने अभी बताया कि अल्फा जो कि कॉमन बेस करंट गेन फैक्टर है वो लेस देन 1 होगा. अभी हमने बात की, क्योंकि अगर आप कॉमन बेस लेते हैं तो फिर आपके पास जो इनपुट होगी वो IE होगी, और IE ट्रांजिस्टर का हाईएस्ट करंट कंपोनेंट है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा जो करंट कंपोनेंट है ट्रांजिस्टर में, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा है, वो IE है. तो IC यानी आउटपुट करंट की रेशो अगर हम ले IE यानी इनपुट करंट के साथ, तो जवाब जाहिर है लेस देन 1 आएगा. तो ये वैल्यूज़ रफली 0.9 टू ऑलमोस्ट एज हाई एज 1 चली जाती हैं. 1 वुड बी एन आइडियल केस, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि जहां आपका ट्रांजिस्टर के बेस में मिनिमम लॉस हो रहा है. Right. So after 11, slide number 11 and 15, we have another important and very interesting slide, which is 26. So I shall make a comparison between this slide and the next slide, which shows the common base current gain alpha for an NPN transistor in the common base configuration. Now we have to analyze, we are analyzing from this slide 26, we are analyzing 3 points simultaneously. Number one, that this is an NPN transistor, and the arrowhead, as I mentioned before, that by now you could realize whether a transistor is a PNP or an NPN just by looking at its arrowhead. The arrowhead from base to emitter indicates this is an NPN transistor, and I have chosen the biasing mode such that it is termed as common base configuration. Now in the common base configuration of an NPN transistor, illustrated on the right side of this slide number 26, we can define the gain factor, the current gain factor alpha, as calculated from the output characteristic, and this is the ratio of the output current IC to the input current IE, and as I would just mention, this obviously has to be less than 1, that is negative. Why? Because as we mentioned throughout this lecture, IE is the highest current, that the magnitude of the current IE is the highest. Why? Because the total number of carriers starting from emitter, they get some of them recombine in the base, and the remaining pass through and get collected at the collector terminal. So obviously, logically, qualitatively, we can say that emitter current has to be slightly greater than the collector current. And then we define the other 2 current components corresponding to the common base configuration for an NPN transistor. Obviously the 2 good current components happen to be IC and IE, and we notice that they have an exponential relationship with the voltages VBE. And then we can compare this slide 26 for the NPN transistor in the common base configuration with this current slide, which is slide number 27. In this slide, I have chosen yet again the NPN transistor so that you can make a comparison with the common base for the same transistor, which is NPN, now with the common emitter configuration. In the common emitter configuration, because the emitter is now common between the 2 biasing, as shown in the output as well as the input circuit, as shown on the in the circuit of right hand side, the gain factor now would be the output current IC, which is still the same as in the common base configuration, but you would notice
that now the input is IB. And you remember from our slide 11, which I had used as a reference slide throughout my today's lecture, that the input current IBs for emitter configuration were very small, of the order of microamp. So beta would be as large as, in this heading I have quoted, it could be as large as 1000, but typical values are 50 to 200. But in my lectures I would take it to be around beta around 100. And then the remaining two good current components for a common emitter NPN transistor therefore would be IC and IB, which again have an exponential relationship. And now we can show the relationship between the same two transparencies which I just shown. This is common emitter, and the gain factor for common emitter is beta, and the for the common base the gain is alpha. The alpha, which is the output, which is the current gain in common base configuration, and for beta, which is the current gain in the common emitter configuration. Because they are both current gain for the same transistor, the only difference being in their appropriate biasing, whether the biasing is common base or the biasing is common emitter. The output characteristic IC, the output current is always IC. Therefore we can obtain a relationship between the two parameters, that is alpha and beta, and I give you a relationship between alpha as a function of beta and beta in terms of alpha. So these two parameters are interdependent, interrelated, because you can calculate the magnitude of current IC by choosing appropriate input, whether it is IB or IE. Then I would come to define last parameter, which is known as the performance parameter of the transistor. आपको याद हो मैंने शुरू में कहा था कि it is desirable, हम तो ये चाहेंगे कि जब हम ट्रांजिस्टर को एक करंट डिवाइस के तौर पे यूज़ कर रहे हों, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी इमिटर से आपके कैरियर चल रहे हैं और लिहाजा एक करंट IE जनरेट कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि बहुत कम लॉस हो बेस में रिकॉम्बिनेशन की वजह से, और सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होके आपके कलेक्टर करंट बन जाए। तो नेचुरली हम किसी अच्छे ट्रांजिस्टर में, जिसकी हम कहेंगे मैक्सिमम एफिशिएंसी है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरियर्स फ्रॉम द emitter आर रीचिंग द कलेक्टर जंक्शन, तो एफिशिएंसी फिर कैसे डिफाइन हुई? एफिशिएंसी लिहाजा डिफाइन हुई इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर नोन एज गैमा। तो पहले मैं बीटा, हम बीटा को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, विच इज़ ए DC gain factor in the common emitter configuration, and now we correlate this beta with the efficiency gamma. Now how do we define gamma? Gamma is defined as the whole current, emitter whole current to the total. If it is a PNP transistor, तो emitter आपके holes हुए, the total whole current, the whole current IP divided by the total current IE. अब इस टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है? इस टर्मिनोलॉजी से ये मुराद है कि इमिटर करंट में अगर आप PNP ट्रांजिस्टर लें तो इमिटर करंट में दो कंपोनेंट आए, क्योंकि अगर आप अपने जहन में, अपने दिमाग में एक PN जंक्शन को लेके आए, इमिटर बेस जंक्शन विच इज़ PN, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बेस के इमिटर में भी जा रहे हैं, तो वो कहलाई बेस करंट, और कुछ और ज़्यादा होल्स P टाइप इमिटर के बेस में जा रहे हैं। तो टोटल इमिटर करंट therefore be would consist of the electron component plus the whole current component. तो जो आपके न्यूमरेटर में टर्म लिखी IE, दैट इज़ ओनली द होल्स, क्योंकि इमिटर के होल्स ही सिर्फ कलेक्टर तक पहुंच रहे हैं, बेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इमिटर में जा रहे हैं, वो कलेक्टर में नहीं जा रहे, क्योंकि हमने इमिटर को
इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेस के, अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स बेस के सिर्फ इमिटर में जाएंगे, कलेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, जबकि इसके बरक्स इमिटर के होल जो हैं वो बेस में दाखिल होंगे और बेस के बाद कलेक्टर में दाखिल होंगे। तो ये रेशो डिफाइन हुई इफ़िशेंसी, इमिटर इफ़िशेंसी फैक्टर गैमा, कि आपके टोटल वो होल की करंट, वो होल्स जो कलेक्टर तक पहुँचे, एंड वो करंट, कलेक्टर करंट जो कि इमिटर से इमिट हुई, विच कंसिस्ट, जिसमें इंक्लूडेड है बेस करंट कंपोनेंट ऑल्सो. So fraction of emitter current carried by holes, and for very efficient diode, जैसे मैंने पहले रिमार्क किया, हम क्या चाहेंगे कि ये गैमा फैक्टर as close to 1 हो as possible. तो ये सिर्फ किस सूरत में अचीव कर सकते हैं, इसकी दो फिज़िकल स्ट्रक्चर अगर हम को समझें, डायोड ट्रांजिस्टर के फिज़िकल स्ट्रक्चर को अगर जहन में दोहराएं, तो बाय रिड्यूसिंग द बेस विड्थ, आप बेस को नैरो कर दें और बेस की टोपिंग को कर दें, तो फिर हम इस एफिशिएंसी फैक्टर को एज लार्ज एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 कर सकते हैं. इस बेस विड्थ नैरो के होने का एक और कॉन्सिक्वेंस होगा, जो कि ठीक है आपने इमिटर एफिशिएंसी तो बढ़ा दी, लेकिन बेस को ज़्यादा नैरो करने से एक और इफेक्ट जो है वो आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में नज़र आएगा, जो हम अगले लेक्चर में अर्ली इफेक्ट के हेडिंग के अंडर उसको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम इतना सिर्फ कह देते हैं कि द एफिशिएंसी फैक्टर गैमा can be made to be as high as 1 by minimizing the loss of carriers coming from the emitter into the base. Base transport factor क्या कहलाया? वो कहलाया the total current जो आपके पहुंच रही है कलेक्टर तक, and the whole current जो कि आपके बेस में पहुंची. यानी in other words, वो होल्स जो आपके बेस में पहुंचे मीटर से और वो होल्स जो आपके कलेक्टर तक पहुंचे. तो फ्रैक्शन ऑफ होल्स कलेक्टेड बाय द कलेक्टर, एंड वी वांट अगेन अल्फा टू बी एज क्लोज क्वाइट क्लोज टू 1. तो होल्स, इमिटर से अगर होल्स चल रहे हैं तो उनके बेस में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस हैं, एंड देन माइंड यू बेस कलेक्टर जंक्शन में भी तो आपके कुछ रिकॉम्बिनेशन हो सकती है. तो ये हम 2 और 3 परफॉर्मेंस पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं कि इमिटर की एफिशिएंसी क्या है. यानी इन सिंपल वर्ड्स, इमिटर एफिशिएंसी किसको कह रहे हैं कि इमिटर से कितने कैरियर चले और कलेक्टर तक कितने पहुंचे. जाहिर है बीच में बेस में कुछ रिकॉम्बिनेशन होगी, कुछ इमिटर बेस जंक्शन में रिकॉम्बिनेशन होगी, कुछ इमिटर बेस जंक्शन में डिप्लीशन रीजन में होगी, कुछ न्यूट्रल बेस रीजन में होगी और कुछ बेस कलेक्टर के डिप्लीशन रीजन में होगी. तो 3 रीजन्स हैं जहां होल्स की रिकॉम्बिनेशन की वजह से होल्स की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, लिहाजा कलेक्टर तक पहुंचने में उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी तादाद कम हो गई. 10 एफिशिएंसी फैक्टर. एंड ट्रांसपोर्ट फैक्टर कि कितने होल्स बेस में आए और कितने होल्स बेस ने कलेक्टर को डिलीवर किए. दैट इज़ वाई इट इज़ डिफाइंड एज बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर कि बेस में कितने पहुँचे और कितने बेस में ने आगे कलेक्टर तक पहुँचाए. अगेन हम क्या चाहेंगे कि बेस में रिकॉम्बिनेशन लॉस कम से कम हो. एंड देन वही 2 फैक्टर्स अगेन, कॉमन बेस डीसी करंट गेन फैक्टर, जिसको अब हमने गैमा की फॉर्म में दोबारा गैमा पैरामीटर की फॉर्म में दोबारा एक्सप्लेन किया है. तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आप इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करें, और जो मैंने सर्किट एलिमेंट सर्किट आपको दिखाया है, दिस अगेन इज़ फॉर एनपीएन एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है. तो मैंने आपको बेस करंट दी है, मैंने आपको कलेक्टर करंट दी है, और आई हैव required that you should calculate the emitter current IE and beta and alpha, and I'm sure you can do so. और यहाँ पर solutions भी मैंने provide कर दिए हैं, लेकिन आप इसको reiterate भी कर सकते हैं for different configuration कि आप
उन टेक्स्ट बुक से जो कि मैंने आपको रेफरेंस में जिनकी लिस्ट दी है, आप कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी ज़ाहिर है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आपको गिवन पैरामीटर स्लाइटली चेंज करने पड़ेंगे। तो जब आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करें तो फिर आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी सर्किट के, ट्रांजिस्टर सर्किट के ऑपरेशन को। लेट्स लुक एट दिस नाउ। हमने बेस करंट 50 माइक्रो एम ली है क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट हमेशा आप इनपुट सर्किट में नॉर्मली करंट्स आर टेकन टू बी स्मॉल। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि अदरवाइज वी माइट एंड अप डैमेजिंग दी डिवाइस, चाहे वो डायोड हो या ट्रांजिस्टर हो। तो हमारी बेस करंट जो है वो IB है और 50 माइक्रो एम है और आउटपुट करंट IC है विच इज़ अबाउट 1 मिली एम है। तो हमने IE निकालना है और IE जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ बेस करंट एंड सम ऑफ कलेक्टर करंट है। तो ये आपके पास आपके अप्रोप्रिएट IE जो है वो 1.05 निकल आई और बीटा जो है वो आपका सिर्फ 20 निकला। तो अब आप देखिए पिछली ट्रांसपेरेंसी में हमने कहा था कि बीटा कैन बी एज लार्ज एज 200 और इवन हाइपोथेटिकली एज लार्ज एज इन सम ऑफ द वेरी स्पेशल ट्रांजिस्टर्स एज लार्ज एज 1000। लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर सर्किट में और इन पर्टिकुलर गिवन वैल्यूज़ के लिए हमारा बीटा सिर्फ 20 निकला है। सिमिलरली अल्फ़ा आपका अप्रोचिंग is not 1, is less than 1, but still as high as 0.95. So we notice from this example, इसको solve करने के बाद हमें पता चलता है कि किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर बाइसिंग के लिए, जैसे इस केस में हमने बेस को कॉमन लिया है और कोई मखसूस वैल्यूज़ आप इनपुट की चूज़ कर लें और आउटपुट जो आपको मिल रहा है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से, तो हम ये देख सकते हैं कि बीटा कितना लार्ज है और अल्फ़ा कितना है। तो इस केस में हमारा बीटा जो है वो 20 है और अल्फ़ा जो है वो हमारा नेगेटिव है। देयरफॉर वी वुड लाइक कि अगर आप एक सर्किट को एज एन एम्पलीफायर सर्किट देखना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में ऑब्वियसली इट विल बी अ DC एम्पलीफायर सर्किट। तो हम इसमें करंट गेन ओनली एज हाई एज 20 हो पा रही है आपकी करंट। अब अगर आप बेस वैल्यू को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो बीटा आप कैलकुलेट करके देखें। यही आपका एग्जाम्पल का आइडिया है दैट इफ़ यू चूज़ change the input values IB slightly, then let's see how beta changes or how alpha changes. तो अगर आप इन reiteration से values को, मुख्तलिफ values को change करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें अल्फ़ा बीटा और इसी तरह गैमा को विच इज़ एफिशिएंसी फैक्टर, तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी you will get a grasp on the analytical skill that how various circuits are operating in a given transistor. So this was for the current characteristics, current voltage relationship for the bipolar junction transistor and their performance parameters, also known as hybrid parameters. And the next important topic which I just mentioned, that is the early effect, we shall discuss that in the next lecture along with some AC circuits, AC amplifier circuits. So we shall meet again, and I do hope that you enjoyed this lecture. Thank you very much indeed. Allah Hafiz.